Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology. Today's topic of discussion is microbes as biocontrol agents or biopesticides. Biocontrol जैसा नाम वैसा काम बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्लांट डिजीजेस और जो पेस्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं. So biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests, or in other words, it is controlling the population of various organisms naturally by employing their predators and parasites. It does not eradicate a population but keeps it at a level where it supports the beneficial organisms and does not cause much harm to our agriculture, horticulture and forest system. For example, instead of trying to eradicate aphids through artificial pesticides, ladybird beetle, which are their natural predators, they are employed for keeping them under control. Similarly, mosquito populations can be kept under check by dragonfly. It is very effective and a long-term method to remove invasive plants. अब जरूरत क्यों पड़ी बायोकंट्रोल मेथड की? In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, that is, by the use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, fruits, vegetable and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds. Hence, we need to adopt biological methods to control the pests and diseases. Now coming to biological control of pests and diseases. Biopesticides are biological agents and their products which are used to control pests like weeds, insects and pathogens. The biological agents which can act as biopesticides are viruses, bacteria, fungi, protozoa, mites, predator insects, smoother crops, etc. Biopesticides are divisible into two categories, bioherbicides and bioinsecticides. So first of all, coming to bioherbicides. Bioherbicides, they are the organisms and their extracts which destroy weeds without harming crop plants. They are of three types: predator herbivores, smoother crops and mycoherbicides. So first of all, predator herbicides. They are herbivores, insects which feed over particular plants. Herbivore प्रीडेटर हर्बिसाइड्स क्या हैं? ऐसे इंसेक्ट्स होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फीड करती हैं, जैसे कोकिनियल इंसेक्ट है, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम. इट हैज कंट्रोल्ड द स्प्रेड ऑफ ओपुंशिया इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ओपुंशिया आप लोगों ने देखा होगा, एक जीरोफिटिक प्लांट होता है और ये बहुत खतरनाक वीड होता है. तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक जो कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम है ये बहुत ज़्यादा सहायक है. Similarly, Chrysolana beetles have overcome Klamath weeds, Hypericum perforatum in USA. Beetle Zygogramma bicolorata is biological control of Parthenium hysterophorus. Coming to smoother crops. Smoother crops are those crops which do not allow weeds to grow. For example, sunflower, soybean, alfalfa, barley, rye, sorghum, sweet clover. तो ये सारी क्रॉप्स क्या करती हैं, ये अपनी विसिनिटी में किसी दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देती. तो रोटेशन विद स्मूदर क्रॉप्स गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो स्मूदर क्रॉप के साथ अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो वीड से हमें सुरक्षा मिल सकती है. नेक्स्ट वन इज माइको हर्बिसाइड्स. दे आर द फंजाई विच पैरासिटाइजेस स्पेसिफिक प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा डज नॉट अलाउ मिल्कवीड वाइन to grow in citrus, which can be sprinkled over weeds for their elimination. तो जो फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरा है ये सिट्रस में मिल्कवीड वाइन को ग्रो नहीं करने देती. Coccinia chondrilla has been used successfully to control skeleton weed Chondrilla gentiana in Australia. Similarly, Alternaria eichhorni in India and Cercospora rodmani in USA have been able to control the growth of Eichhornia crescens, that is water hyacinth, जिसको जलकुंभी प्लांट भी कहते हैं. ये बहुत खतरनाक एक्वाटिक वीड है आइशोर्निया. तो इसकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस फंगस की सहायता से, अल्टरनेरिया आइशोर्नी की सहायता से.
Next is bioinsecticides. They are living organisms which are able to kill or repel specific insects. Predators like ladybug and praying mantis can control scale insects or aphid pests of vegetable, cotton and apple. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystems. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Similarly, baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. तो Nucleopolyhedrovirus ज़्यादातर यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow spectrum insecticidal application. तो ये वायरस जो होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, सिंपल जो बिल्कुल टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को ये हिट करते हैं. They have been shown to have no negative impacts on plants, mammals, birds, fish, or even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management programs, or when an ecologically sensitive area is being treated. An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, जिसको हम BT की फॉर्म में भी लिखते हैं. These are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas. Brassicas means Brassica genus के जो plants होते हैं, Brassica campestris हैं, and so on. And fruit trees where these are eaten by the insect larvae. तो जब insect larvae इन spores को खा जाती हैं, तो जब उनके अंदर गट में वो लार्वा जाता है, ये स्पोर जाता है, तो वहाँ पर ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे जो लार्वा है वो मर जाता है. The bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. So because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into plants. तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, जो Bacillus thuringiensis से टॉक्सिक जीन से उनको एक्सट्रैक्ट करके प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे वो प्लांट्स क्या हो गए, अब इंसेक्ट्स के प्रति उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई. ऐसा ही एक प्लांट है BT cotton. So BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country. Sporine, developed in Germany, is the first commercial bioinsecticide obtained from Bacillus thuringiensis. The use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. तो अगर हम बायोकंट्रोल मेजर को यूज करेंगे तो इससे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो उपयोग है उसमें काफ़ी कमी आएगी. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, pattern of feeding and habitats that they prefer. तो बायोलॉजिकल फार्मिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनके लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम उनके लाइफ साइकिल को समझ लेंगे तो हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. This will help develop appropriate means of biocontrol. तो आज की वीडियो में इतना ही. Thank you very much.